मम्मी मम्मी उठो ना मम्मी, क्या हो गया तुम्हें मम्मी? Oh no! अरे जल्दी से मम्मी को हॉस्पिटल लेकर चलो। अरे लेकिन इस बाढ़ के पानी में कैसे लेकर जाएंगे? और देखो बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, अगर हम यहीं खड़े रहे तो हम भी पानी में डूब जाएंगे। चुप करो तुम दोनों, जल्दी ऐसे ही लेकर चलो मम्मी को हॉस्पिटल। चिंकिया ठीक आ रही है, मम्मी को लेकर चल चिंटू हॉस्पिटल। अगर मम्मी टे बोल गई तो हमें खाना बनाकर कौन खिलाएगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा मम्मी को। और तेज चल बाबू। अरे रुक जाओ चिंटू और बाबू। क्या हुआ चिंकी, क्यों रुकवाया हमें? वो देखो वहाँ पर एक सांड है। अगर हम मम्मी को उस सांड पर बैठा कर ले जाएं, तो हम जल्दी डॉक्टर के पास पहुँच जाएंगे। कहीं वो सांड हमें ही मारने लगा तो? और अगर जल्दी मम्मी को हॉस्पिटल नहीं ले गए तो मम्मी टे बोल जाएगी। बस यही एक तरीका है मम्मी को जल्दी ले जाने की। तो फिर जल्दी चलो सांड के पास। ये तो अपनी सींगें दिखा रहा है हमें मारने के लिए। सांड भाई, अगर तुम मेरी मम्मी को डॉक्टर के पास पहुंचा दोगे ना, तो मैं तुम्हें ढेर सारी हरी हरी घास खिलाऊंगी। चलो जल्दी तुम दोनों मम्मी को सांड के पीठ पर रख दो। चल जोर लगा के मम्मी को ऊपर फेंक बाबू। ठीक है, उठाओ। चलो अब तुम दोनों भी बैठ जाओ सांड पर, उसके बाद मैं आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो इस सांड के कितने बड़े बड़े सींग हैं, वो मुझे मार देगा। चुप कर, तुझे अपनी परी है। मम्मी की चिंता नहीं है क्या तुम्हें? रुक, पहले मैं बैठता हूँ। अरे दादा गिर गया। अरे पकड़ो पकड़ो, उस सांड को पकड़ो, वो मेरे मम्मी को लेकर भाग रहा है। अरे हमारे अलावा और कौन है यहाँ जो उस सांड को पकड़ेगा? चलो दौड़ो, उस सांड को पकड़ना ही होगा। हाँ चलो, और तेज दौड़ो। वो सांड मम्मी को लेकर बहुत दूर भाग गया है। भूइयां तेज दौड़े, गर्दन तक पानी आ गया है। हम चाह के भी तेज नहीं दौड़ पाएंगे पानी में। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पानी में हम तेज नहीं दौड़ सकते। अरे देखो वो सांड रुक गया वहाँ। चलो आराम से, धीरे धीरे चलो सांड के पास, नहीं तो दोबारा वो भाग जाएगा। अब चढ़ जाओ सांड पर। ससुरा सांड फिर से भाग गया मम्मी को लेकर। लगता है अब हम मम्मी को कभी नहीं देख पाएंगे। रो मत चिंकी, मम्मी को कुछ नहीं होगा। देखो वहाँ पर एक नाव है। तो अब देख क्या रहे हो? चलो नाव चलाते हैं और सांड को पकड़ते हैं। चलो तुम दोनों बैठो, मैं चलाता हूँ। जल्दी जल्दी नाव को चला बाबू, सांड काफी दूर तक चला गया है। तो ये लो। थोड़ा सा और तेज चला बाबू, वो सांड अभी भी बहुत दूर है। अब ये लो। बहुत बढ़िया बाबू, हम पहुंचने ही वाले हैं। रुक जा सांड, मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। तुम मत ले जा मम्मी को। जल्दी नाव को रोक बाबू, वो सांड हमें मारने के लिए खड़ा हो गया। अरे नाव को रोकने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये नाव रुक ही नहीं रहा। नहीं, मार दिया रे ससुरा। चिंटू और बाबू तुम दोनों कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। भागो सब, सांड आ रहा है। अरे मैं तेज नहीं भाग पा रहा हूँ, बचाओ मुझे। देखो वहाँ पर एक पेड़ है, चलो उस पर चढ़ जाते हैं। जल्दी से आजा पेड़ पर चिंकी। हाँ हाँ आती हूँ। अरे
पेड़ पर तो नहीं आया। मैं यहाँ हूँ, मैं तेज नहीं दौड़ पा रहा हूँ, बचा लो रे मुझे। और दम लगा के दौड़ बाबू, सर तुम्हारे पीछे ही है। बाबू जल्दी आ जा पेड़ पर। बाल बाल बच गया रे दादा, बचाओ। What she wanted, but because she carried a spark of someone he had lost, someone he could not reclaim. She realized then that her role had changed. She was no longer the girl waiting for answers. She had become the keeper of a memory, a witness to grief, and the silent architect of healing. The suitcase at her feet felt inconsequential now. She bent, picked it up, and with careful hands, returned it to the corner of the platform where she had left it days ago. She left behind what she had carried for so long, fear, doubt, and the weight of survival, without needing to discard it violently. He took a step closer, but she didn't reach for him. Instead, she handed the scarf back, fully aware of its power, aware that its story was no longer hers alone. Some things are meant to be given, not kept, she said, voice trembling but clear. He tucked it into his coat, the finality settling like fog between them. For a moment, they simply stood, two figures in the wet light, bound by threads of memory, silence, and recognition. The wind tugged gently at their hair, carrying with it the residue of storms past, of choices made, of invisible bridges crossed. She turned to leave, her footsteps steady now, a quiet strength in each motion. He did not call her back. She didn't expect him to. Some things are not meant to linger, not meant to belong. As she walked away, the train tracks glimmered beneath the fading clouds, a reminder of journeys begun and ended, of paths intersecting and diverging. And in the space between the platform and the streets beyond, she understood the truth. Not every stranger you help is meant to stay, but some leave you changed forever. The red scarf, tucked safely in his coat, fluttered once in the wind, a silent witness to endings and beginnings, to loss and reclamation, to the quiet power of giving rather than taking. The streets were quiet now, the early morning sun painting gold across brick sidewalks and shuttered shop windows. She walked alone, suitcase in hand, though its weight no longer pressed on her shoulders. Each step felt deliberate, measured, a rhythm she had claimed for herself. The red scarf lay folded in a drawer at home, the light from the window catching its frayed edges. She hadn't needed it today, hadn't needed it yesterday. It was no longer a shield, no longer a talisman. It had become memory, a testament to what had passed and what had quietly reshaped her. Her thoughts drifted to the stranger, to the brief moments of recognition, the subtle understanding that had passed between them like a hidden current. Sometimes love is not romance. It's recognition, she whispered, words from her own heart or perhaps borrowed from a moment long before. She could not say whether they were hers or his, but they fit, like puzzle pieces that had always been meant to meet. Around her, the city breathed in its usual rhythm, a cat weaving between parked cars, the distant hum of a streetcar, a woman calling to her child. She noticed these small things now, really noticed. Before, the world had felt like a blur, a rush of necessity and survival. Now, every detail, every movement held weight, significance, and quiet beauty. She paused on a bridge, staring at the river below, sunlight rippling across the water like liquid glass. She let the wind touch her hair, cool and persistent, brushing against her cheek like a whisper. It reminded her of that first day on the train platform, the moment everything had begun, the fear, the hesitation, the pull of something unseen. She smiled faintly, not a triumph, not relief, but understanding. Her suitcase trailed behind her, a shadow of who she had been. She did not need to unpack it immediately. Some burdens were carried in memory. Some were meant to rest in drawers, carefully folded, and some were left to shape the steps forward. As she turned a corner, the city stretched before her, open and uncertain. She felt a quiet strength rising, soft but insistent, the kind that comes from having seen the weight of life, having touched its edges, and having survived.
The scarf rested in its drawer. The river shimmered beneath her gaze. The world continued to hum, and she walked on, carrying herself with a balance between caution and courage. Not every ending is closure, and not every beginning is arrival. Some moments exist to remind us we are still learning how to hold ourselves. She let the thought linger as she disappeared into the morning light, the story unfinished, but somehow whole.